India, Sri Ramnath Kovindji, we can see the Tamil Nadu the Telangana governor, Sri Tamilisai also with them. Now, the president gone over there to near to the 120 kg golden deity. Now he is unveiling this 120 kg Bhagavad Ramanuja's golden statue. We are blessed to see this wonderful moment. We can see the beautiful smile of the Bhagavad Ramanuja. We can feel the bliss of Bhagavad Ramanuja. How beautiful this gold entity is. It has been made up by 120 kgs gold. The statue of equality is being unveiled by the Prime Minister Narendra Modi. And this gold entity today, at this moment, is being unveiled by our beloved President of India, Sri Ramnath Kovindji. Our beloved His Highness Sri Now we are seeing the gold entity is being offered prayers by the President of India, Sri Ramnath Kovindji, the Governor of the state of Telangana, Sri Tamilisai, and our beloved His Highness Chinnajiyar Swamiji is now explaining the speciality and details of this 120 kg Bhagavad Ramanuja's deity. Now we can see Swamiji is elaboratedly explaining them the thought of equality, the spirit of equality, and the reason to establish this 1000 crore worth project, divine project, great project, esteemed project. Now we are seeing Dr. J. Rameshwarao Garu along with our beloved His Highness Sri Tridandi Chinnaramanuja G.R. Swami over there in the premises. Sri Ramnath Kovindji is offering his prayers and taking blessings from His Highness Sri Chinnajiyar Swamiji. Now we are seeing that in this current world, the geopolitical harmony is in a state of flux, where people live amidst multitude of challenges.
including fear of war, political strife, poverty, global warming, endangered environment, depleting natural resources, and religious fundamentalism. His Highness incessantly works to promote the world peace and harmony through the propagation of yoga, meditation, spiritual and ancient wisdom. These enable human body, mind, and soul to develop tolerance, joy of sharing, non-violence, attitude of gratitude towards environment, towards the God, and mutual respect for all living beings. To achieve the state of equality among us, His Highness is being inspired by the divine teachings and lineage of Bhagavad Ramanuja. Now established this huge statue of equality and this 120 kg golden deity of Bhagavad Ramanuja for the welfare of this mankind, for the equality of this mankind. Now we are seeing on screen that Sri Ramnath Kovind ji have unveiled the Shila Palaka. అయిపోయిందా సార్? చూసినంత మాత్రంబున కొరతలేని భాగ్యము శ్రీలక్ష్మీనారాయణులే వరములిచ్చు తథ్యము విశ్వశాంతికై లక్ష్మీనారాయణ క్రతువు సత్య సంకల్పులు చిన్నజీయరు ఆశయాన వెలుగు సహస్రగుండాత్మకమగు వేదంబుల కృతులు ఘన రామానుజ సహస్రాబ్ది వైభవాల స్మృతులు. ఫస్టే కొంచెం బాగా దండ రెచ్చగొట్టేస్తుంది కదా, మళ్ళీ మధ్యలో స్లోగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ లెవెల్ పెంచుకుంటాం కదా, నీట్గా ఉందా, డిగ్నిఫైడ్ సార్, డిగ్నిఫైడ్.
He is extending his duties to serve the mankind as a promoter of the world peace and harmony, to look after the animal welfare, looking after disaster relief activities, providing free food, cancer, health awareness services, providing free educational services. Head of this organization has inspired millions of youth all over the world. Turn the road of service, educated communities to live in harmony with the environment, with traditional and educational and development program for children. He's building a stronger future for the future generations. His discourses are profound and he incorporates his own. Now, he established this vast 200 acres Ramanuja ashram and installed the statue of equality. Also installed the 120 kg golden deity of Bhagavad Ramanuja for the great inspiration for us, for all the mankind, for the great inspiration to achieve equality among us, for the great inspiration to serve the mankind. श्रीमन्नारायणीयचिदानन्दलाशमै बोधायन बुधविधान ब्रह्मसूत्रभाषमै श्रीमन्नारायणीयचिदानन्दलाशमै बोधायन बुधविधान ब्रह्मसूत्रभाषमै अधिको श्रीरामानुज घनगुणगण जयध्वजं विनरो प्रतिकुण्डे सडिग आरे परेप अनुक्षणम् जय जय रामानुज जय 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 हो रामानुज जय 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 रामानुज जय 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 हो रामानुज जय 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 रामानुज जय हो रामानुज जय 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 रामानुज जय 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 हो रामानुज जय Uniquely distinguished representative of the world's most ancient but overfetched Vedic knowledge and practices, living without being with Swamiji, is living without knowing what it means to live. Fortune eradicate the heart from the स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतमिది దేశ దేశ భక్తులకి ఆధ్యాత్మికవేత్తలకి నేతలకి ఘన స్వాగతమిది దేశ దేశ భక్తులకి ఆధ్యాత్మికవేత్తలకి నేతలకి స్వాగతం శుభ స్వాగతం
స్వాగతం శుభ స్వాగతం. Never says no to people who want to see him, even at midnight. లోకోన్నత రామానుజ గురు విగ్రహ ప్రతిష్టకి అష్టోత్తర శత వైష్ణవ దేవాలయ క్షేత్రానికి రండి రండి రామానుజ సహస్రాబ్ది పండుగకి. విశిష్టాద్వైత దివ్య ప్రసాద ప్రసాదానికి రండి రండి రామానుజ సహస్రాబ్ది పండుగకి. విశిష్టాద్వైత దివ్య ప్రసాద ప్రసాదానికి స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం. Thoughts of suffering humanity. వేయి యజ్ఞగుండాల దివ్య అగ్నిశిఖలు ఒక్కసారి కనులారా చూచిన చాలు. తొలగు సకల పాపాలు కలుగును విజయాలు. నలుదిక్కుల ఋత్విక్కుల వేద మంత్ర ఘోషలు మనసారా విన్న చాలు మనుగడకే మేలు. తొలగి అనారోగ్యాలు కలుగు మహాభాగ్యాలు. హోమ ధూమ సుగంధాలు పీల్చిన చాలు. శాంతి సౌఖ్యముల సాగును సంసారాలు. రండి రండి రామానుజ సహస్రాబ్ది పండుగకి. విశిష్టాద్వైత దివ్య ప్రసాద ప్రసాదానికి స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం. జై జై రామానుజ జై జై చిన్నజీయరని జనులంతా తరలి రండి జన్మధన్యమౌనండి. అమృతత్వంతో నిండిన ఆశీస్సులు పొందరండి. ధర్మార్థ కామ మోక్ష ఫలములు సిద్ధించునండి. దేవతలు ఋషులకే కనుల పండుగే ఇది. భరతమాత పరవశించు జీయరోత్సవం ఇది. పరమాద్భుత కార్యంలో వచ్చి పాల్గొనండి. సమతా జగదాచార్యుని సందర్శించండి. రండి రండి రామానుజ సహస్రాబ్ది పండుగకి. విశిష్టాద్వైత దివ్య ప్రసాద ప్రసాదానికి స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం. స్వాగతమిది దేశ దేశ భక్తులకి ఆధ్యాత్మికవేత్తలకి నేతలకి. ఘన స్వాగతమిది దేశ దేశ భక్తులకి ఆధ్యాత్మికవేత్తలకి నేతలకి. స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం ఘన స్వాగతం. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वा अञ्जनिष्ठन्नचाङ्गुलम्. विश्वशान्तिकै लक्ष्मी नारायण क्रतुः सत्य
సత్య సంకల్పులు చినజీయరు ఆశయాన వెలుగు సహస్రకుండాత్మకమగు వేదంబుల కృతులు ఘన రామానుజ సహస్రాబ్ది వైభవాల స్మృతులు అష్టాక్షరి నందించిన గురుదేవుని సాక్షిగా సన్మార్గము నడిపించిన సమతామూర్తిగా శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయ వైభవాల వేడుగా కనివిని ఎరుగని యాగము కలిదోషపు పరిహారము విశ్వశాంతికై లక్ష్మీ నారాయణ క్రతువు సత్య సంకల్పులు చినజీయరు ఆశయాన వెలుగు సహస్రకుండాత్మకమగు వేరంబుల కృతులు ఘన రామానుజ సహస్రాబ్ది వైభవాల స్మృతులు గంగడోలు మోపురాల గోమాతల పూజలు వేదాలను వల్లివేయు వేదాంతుల గొంతులు ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్వేధాని దధే పదం సమోఢమస్య వాగుం సురే గంగడోలు మోపురాల గోమాతల పూజలు వేదాలను వల్లివేయు వేదాంతుల గొంతులు యాగశాల ప్రాంగణాలు ప్రకృతిలో శోభలు నిఖిల జగతి శ్రేయస్సుకు అంకురారోపణము విశ్వశాంతికై లక్ష్మీ నారాయణ క్రతువు సత్య సంకల్పులు చినజీయరు ఆశయాన వెలుగు కోటి దేవతలకు ఆవాహన పూజలు పరవశించి వీక్షించను పెదజీయరు మూర్తులు ముక్కోటి దేవతలకు ఆవాహన పూజలు పరవశించి వీక్షించను పెదజీయరు మూర్తులు 108 దివ్య దేశ ఎక్కడికండి ప్రవచన మండపానికి వస్తున్నాడా చోట ప్రతిష్ఠించు భవ్య గోపురంబులు విశ్వశాంతికై లక్ష్మీ నారాయణ క్రతువు సత్య సంకల్పులు చినజీయరు ఆశయాన వెలుగు పరమాత్ముని దరి చేర్చే అష్టాక్షరి మంత్రము నిష్ఠా నియమాలతోడ జపతర్పణ హవనము ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహా పరమాత్ముని దరి చేర్చే అష్టాక్షరి Now, once again, a warm welcome to the Doordarshan live telecast of Sri Ramanuja Sahasrabdi Utsav from Hyderabad, Muchintal, Sri Ramanagaram. The inspirer and founder of this Statue of Unity, Sri Tridandi Chinnaramanuja G.R. Swamiji, has taken our beloved President of India, Sri Ramnath Kovind ji, to the Statue of Equality, and a few minutes ago, now we are seeing the gold entity of the 120 kg gold entity of the Bhagavad Ramanujacharya statue over there. It was in, a few minutes ago unveiled by the President of India. The inspirer and founder Sri Tridandi Chinnaramanuja G.R. Swamiji has explained all the facts about this project, all the details of this project, and Dr. J. Rameshwarrao Garu accompanied with him over there. The governor of Telangana, Sri Tamilisai ji, also was there at the time of unveiling the golden statue. Now, in a few seconds, the President is going to address the nation from the Pravachan Mandapam, the big auditorium, about this project, about the 120 kg
Bhagavad Ramanuja's ditty and about the statue of equality. His Highness Chinnajia Swamiji is busy in spreading the message of Vedas, Upanishads, and messages of great seas tirelessly. He never says no to people who want to see him. That's the reason now you are seeing thousands and thousands of people are come here to take the blessings of divine blessings of His Highness Shinajir Swamiji and to witness this great memorable event. That His Highness Shinajir Swamiji is unmindful when it comes to attending his needs, but very active in attending to others' sufferings. For the inquisitive, he is an unparalleled spiritual teacher. For the intellects, he is a died scholar and philosopher. For the suffering parts of the world, he is an ambassador of peace. For the grief-stricken, he is an ever-helping, inspiring leader, eloquent speaker, a reservoir of divine qualities, and a uniquely distinguished representative of world's most ancient but ever fresh Vedic knowledge and practices. Living without being Swamiji is living without knowing what it means to live or to love. The entire fortune to humanity is elevated in the existence of such a single personality on earth. His mere presence appears to eradicate the hardships of the suffering humanity. Now, we are seeing thousands and thousands of devotees are over here at Sri Ramanagaram, Tridandi Chinnajiyar Swamiji's Ashramam Muchintal, Hyderabad, Telangana. Within a few minutes, now we are seeing the Pravachana Mandapam, the auditorium over there. Within a few minutes of span, our beloved President Sri Ramnath Kovindji is going to address the nation on occasion of unveiling the 120 kg gold city of Bhagavad Ramanuja. We can see the security arrangements over there at Pravachana Mandapam. Everybody is eagerly waiting for the arrival of President Ramnath Kovindji over there. Ramanuja is famous as chief proponent of Visishtadvaita sub-school of Vedanta, and his disciples were likely authors of texts such as the Sahityanayana Upanishad. Ramanuja wrote Bhashya and Brahmasutras and Bhagavad Gita in Sanskrit. Ramanuja presented the epistemic and theological importance of bhakti or the devotion to a personal God. According to Ramanuja, Lord Vishnu is the one and only God who saves his disciples, and everybody who follows his Vedantic philosophy must worship only Lord Vishnu. His theories assert that there exists a plurality and distinction between Atma, the soul, and Brahma, the metaphysical ultimate reality. He also affirmed that there is unity of all souls and that the individual soul has the potential to realize identity with the Brahma. Ramanuja was born into a Tamil Brahmin community in a village called Sri Perambudur, which is in the present day Tamil Nadu state. His followers in Sri Vaishnava tradition wrote hagiographies, some of which were composed in centuries after his death, and which the tradition believes to be true.
The traditional hagiographies of Ramanuja states that he was born to mother Kantimati and father Kesava Somayaji in Sri Perambudur, near today's modern Chennai in Tamil Nadu. He is believed to have been born in the month of Chitrai under the star Tiruvadirai. The scripture states his life as a divine birth. According to those scriptures, when he grew up, Ramanuja married and moved to Kanchipuram. He was studied in an Advaita Vedanta monastery. After that, he mastered the Upanishads, Vedanta. Later on, he attempted to meet another famed Vedanta scholar, Yamunacharya. Ramanuja was the great grandson of Yamunacharya through a granddaughter. After that, Ramanuja became a priest at Varadaraj Perumal temple, that is in Lord Vishnu's temple at Kanchipuram. There he began to teach the moksha, that is liberation or release from samsara. That is to be achieved not with metaphysical Nirguna Brahma, but with the help of personal God and Saguna Vishnu, Lord Vishnu. Ramanuja has long enjoyed foremost authority in Lakshmi Narasimha ji to come onto the dais and take your seat, please. I also request our Honorable Governor of Telangana, Srimati Tamil Sai Soundarajan ji, to grace the dais. Chair. Jai Sriman Narayana. We offer humble dasosams to Puja Sri Chinnajayar Swamiji. We extend a warm welcome to the Honorable President of India, Sriman Ramnath Kovind ji. Please rise. I request Honorable President to grace the dais, and I also request the First Lady of the nation Srimati Savita Kovind ji to join the President on the dais. We will begin the celebration with national anthem. Please stay raised. Jai Sri Narayana.
be seated. I pray to Puja Sri Chinnajiyar Swamiji to address the August gathering here. जय श्रीमन नारायण। प्रिय भगवत बंधुओं, आज श्री रामानुज सहस्राब्दी समारोह महोत्सव का 11 दिन में भारत का राष्ट्रपति माननीय महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी को हम हृदयपूर्वक और सादर स्वागत करते हैं आप सबके ओर से। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज 1000 साल पहले इस धरती को पावन करते हुए उस काल खंड में समता का सिद्धांत को दुनिया को बताएं और उसको लागू करके भी दिखाए थे। इस देश में वेदों को बुनियाद बनाकर जितने भी जातियां, जितने प्रकार के लोग भी रहते हैं, वे सब एक ही भगवान का संतान होने के कारण कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दलित, कोई ताड़ित, कोई पीड़ित ऐसा नहीं रहना चाहिए। सब लोगों को भगवान का मंत्र मिलना चाहिए। सब लोग भगवान के बारे में जान सकेंगे। केवल जिज्ञासा यानी श्रद्धा की जरूरत है। ये बात 1000 साल पहले रामानुजाचार्य स्वामी कहकर उनका सिद्धांत को दुनिया को सुनाए और उसकी परंपरा को भी चला के दिखाए। आज उन महान संत का 1000वीं शताब्दी महोत्सव, सहस्राब्दी महोत्सव मनाते हुए हम अपना भारत का प्रियतम और माननीय महोदय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी को आप सबके ओर से हम यहाँ स्वागत करते हुए वे हमको श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी की समता और उसे इस देश का महत्व कैसा अच्छी तरह बढ़ा है और रामानुजाचार्य स्वामी जी का 1000वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर 1035 कुंडों में चारों वेदों का हवन और उसके द्वारा समाज में रहने वाले जो आंतरिक वायरसेस जो होते हैं वो भी निकलना चाहिए, हटना चाहिए। इस संकल्प से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और उनका आशीर्वचन और भगवान का भी मंगल आशासन स्वीकार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। उनको सपत्नीक और सकुटुंब हम यहाँ पर स्वागत का अर्पण करते हुए इस भारत को और दुनिया को आज वे अपने कर कमल से रामानुजाचार्य स्वामी जी का स्वर्णमय मूर्ति को अनावरण करके और उनका महत्व दुनिया को दिखाए थे। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और उनके कृतज्ञता प्रकट करते हुए जाति को
संबोधन करने के लिए श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, भारत का राष्ट्रपति महोदय, जिनका समय में इस देश का गौरव दुनिया में बहुत अच्छी तरह बढ़ा और कश्मीर मुस्कुराती है और काशी में महादेव आनंद से हंस रहे हैं और रामचंद्र भगवान अपना जगह को दुनिया को दिखाने के लिए तैयारी में हैं। ये सब महान आपका ही समय में हो रहा है। आप इस देश को दिशा निर्देश करते हुए समता के बारे में हम सबको प्रेरणात्मक संबोधन करें, ऐसा हम आपको स्वागत कर रहे हैं। जय श्रीमन नारायण। Jai Sriman Narayana, Dasoham Swamiji. Now I request Sri Ramanuja Sahasrabdi Trust dignitaries, Dr. Rameshwar Rao ji, Sri G.V. Bhaskar Rao ji, and Lakshmi Narasimha Rao ji to honor the President of India, the First Lady of the nation, and also our Telangana Cinematography Minister Talasani Srinivas Yadav ji. We also pray to His Holiness Sri Chinnajiyar Swamiji to bless them with Ramanuja Murti. Jai Shriman Narayana. Today, Honorable President of India has unveiled the beautiful golden statue of Bhagavad Ramanujacharya. Equality is when everyone plays a role and is given an opportunity. With Acharya's Mangala Sasanams, each and every one of you played a pivotal role in making this a reality. Acharya Sankalpam and Bhakti on Ramanujacharya has drawn millions of people from all over the world, regardless of age, caste, race, nationality, have all contributed to this Sankalpam. 4-year-old kids have given their kiddie bank collections. Teenagers have given away their allowances. Householders have given away their 1 month of wages. And elderly people have contributed their part of the share. This is the case from all over Asia, Australia, Africa, Europe, and America continents. If this is not equality, then I don't know what it's called. This is the statue of equality, statue of Acharya Bhakti, statue of Samata Murti. Let's all celebrate this with a big round of applause. We also request His Holiness Swamiji to honor the Governor of Telangana, Srimati Tamil Saiji. I now request Honorable President of India to address the gathering here, please.
We now request Honorable President of India to address the gathering here. थोड़ा छोटा है सर। इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज टी श्रीनिवास यादव जी, इस पूरे कार्यक्रम और एक जिन्होंने इस देश में श्री रामानुजाचार्य की भव्य प्रतिमा के लोकार्पण स्थापना करके जो देश में इतिहास रचा है, ऐसे श्री श्री जीयर स्वामी जी, मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर रामेश्वर राव जी, इस आयोजन से जुड़े मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित संत समाज, देवी और सज्जनों, जय श्रीमन नारायण, श्रीमते नारायण नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। भारत के गौरवशाली इतिहास में भक्ति और समता के सबसे महान ध्वजवाहक भगवत रामानुजाचार्य की सहस्राब्दी समारोह के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर श्री रामानुज के श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई देता हूं। इस समारोह में भाग लेना तथा भगवत रामानुजाचार्य की स्वर्णिम प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। विगत 5 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामानुजाचार्य की भव्य समता मूर्ति का लोकार्पण किया था। मेरी मान्यता है कि श्री रामानुज स्वामी जी की प्रतिमा से पवित्र इस क्षेत्र में 1035 कुंडों के श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तथा श्री 108 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा से एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का सदैव संचार होता रहेगा। यह एक दैवी संयोग है कि इस क्षेत्र का नाम भी श्री रामनगर है। ये कहा जा सकता है कि ये स्थल भक्ति भूमि है, समता भूमि है, विशिष्टाद्वैत दर्शन की भूमि है तथा ये भारत की संस्कार भूमि है। इस क्षेत्र के स्थापित भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना में श्रेष्ठतम सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी जा सकती। गोदावरी नदी के आशीर्वाद से सिंचित तेलंगाना की प्रत्येक यात्रा मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। लेकिन आज की इस यात्रा के दौरान मुझे देश की आध्यात्मिक व सामाजिक परंपरा के एक महान अध्याय से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भूयश्च शरदः शतात् अर्थात 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक सक्रिय रहने का शुभ संकल्प श्री रामानुज के जीवन में सार्थक हुआ था। 100 वर्षों से भी अधिक अपनी लंबी जीवन यात्रा के दौरान स्वामी जी ने भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक स्वरूप को वैभव प्रदान किया। लोगों में भक्ति और समानता का संदेश प्रसारित करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं
श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, सिंहाचलम, आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, नैमिषारण, द्वारका, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, पुष्कर और नेपाल में मुक्तिनाथ तक की यात्रा की। Ladies and gentlemen, Sri Ramanuja's Visishta Dvait is not only a singular contribution to philosophy, but he also showed the relevance of philosophy in day-to-day life. What is called philosophy in the West has been reduced to a subject of only scholarly study. But what we call darshan is not a matter of dry analysis. It is a way of looking at the world and also a way of life. That has always remained true in India, thanks to philosopher saints like Sri Ramanujacharya. देवी और सज्जनों, श्री रामानुजाचार्य ने दक्षिण की समृद्ध भक्ति परंपरा को, विशेषकर आलवार संत कवियों की परंपरा को बौद्धिक आधार प्रदान किया। जैसा कि सर्वविदित है, अधिकांश आलवार संत पिछड़ी जातियों में जन्मे थे। श्री रामानुजाचार्य ने तथाकथित अछूत जाति के तिरुप्पन आलवार जैसे संतों की रचनाओं को वैष्णवों के वेद के रूप में सम्मानित किया। तथाकथित पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए वैष्णव धर्म के द्वार खोलने का कार्य श्री रामानुजाचार्य ने ही किया। उन्होंने समझाया कि भक्ति सभी जाति भेदों से ऊपर है और ईश्वर की आराधना का सबको समान अधिकार होता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी पुरोहित वर्ग की जरूरत भी नहीं होती। श्री रामानुज स्वामी ने तत्कालीन समाज व्यवस्था में समता का संचार किया। उन्होंने वेदांत की बौद्धिकता में भक्ति के रस का मिश्रण किया। उन्होंने बुद्धि को हृदय से जोड़ा तथा अमूर्त को मूर्त से जोड़ा। उन्होंने सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण में जाने की भावना को उत्पन्न करने की शिक्षा दी और इस भक्ति भाव को प्रपत्ति का नाम दिया। उन्होंने भक्ति द्वारा मुक्ति का मार्ग दिखाया। Ladies and gentlemen, saint poets and philosophers like Sri Ramanujacharya have created and nurtured India's cultural identity, cultural continuity and cultural unity. They have built the concept of a nation based on cultural values. This culture-based concept of nation is different from how it is defined in the Western thought. References to the Bhakti tradition that united India in a single thread centuries ago are found in the Puranas. This tradition can be seen in the form of the Bhakti sects inspired by Sri Ramanujacharya, which had spread from Sri Rangam and Kanchipuram in Tamil Nadu to Varanasi in Uttar Pradesh. Thus, the emotional unity of Indians is centuries old. देवियों और सज्जनों, भारत में भक्ति की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है। इसके लिए उत्तर भारत के साधु समाज ने श्री रामानुजाचार्य जैसे दक्षिण भारत के संतों के प्रति सदैव कृतज्ञता व्यक्त की है। उत्तर भारत के भक्तों में एक दोहा प्रचलित है जिसमें कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। अर्थात भक्ति की धारा दक्षिण के क्षेत्र में आलवार संतों और श्री रामानुजाचार्य की परंपरा में उत्पन्न हुई। उसे स्वामी रामानंद उत्तर भारत में ले आए। उनके शिष्य संत कबीर ने जम्बूद्वीप सहित 7 द्वीपों और भरतखंड सहित सभी 9 खंडों में अर्थात समस्त भारतवर्ष में भक्ति के प्रकाश को फैलाया। स्वामी रामानंद ने कबीर, रैदास, दादू,
दयाल और पीपा जैसे संतों को भक्ति का मार्ग दिखाया। स्वामी रामानंद के वे सभी शिष्य तथाकथित पिछड़ी जातियों के थे। आज से सदियों पहले के इस उदाहरण में भारत की समता मूलक चेतना के तत्व विद्यमान हैं। इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य के दर्शन पर आधारित भक्ति की धारा ने समता के आधार पर समस्त भारत में समाज के सभी वर्गों को एक दूसरे से जोड़ा। हमारी परंपरा में समता के भाव को ही ज्ञान का मुख्य तत्व माना गया है। गीता के 5वें अध्याय में कहा गया है कि पंडितः समदर्शिनः, अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। समदर्शी होना ही श्री रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। देवियों और सज्जनों, कल ही मैं महाराष्ट्र में था। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पैतृक गांव में गया था और आज मैं इस पवित्र समारोह में यहां उपस्थित हूं। बाबा साहब के परिवार ने कबीर पंथ को अपनाया था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बाबा साहब का वो छोटा सा गांव आम्बडवे और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित यह स्थल श्री रामनगर श्री रामानुजाचार्य और संत कबीर की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। समता पर आधारित भक्ति के आदर्श का स्मरण कराने वाले ये दोनों स्थान मेरे लिए पवित्र तीर्थ स्थल ही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar, the main architect of our constitution, who stood for social justice, had clearly stated that the fundamental constitutional ideals of our modern republic are based on the cultural heritage of India. Baba Sahib had also mentioned with great respect the egalitarian ideals of Sri Ramanujacharya. Thus, our concept of equality is not derived from Western countries. It has developed on the cultural soil of our India. Our eternal vision of Vasudhaiva Kutumbakam is based on equality. Equality is the cornerstone of our democracy too. Equality before law, prohibition of all forms of discrimination, equality of opportunity, abolition of untouchability, all these fundamental rights have been enshrined in our Constitution. To achieve the constitutional objective of establishing an equitable society, many programs of public welfare are run by governments. देवियों और सज्जनों, समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु कार्य करना भी हमारे देश का प्रमुख जीवन मूल्य रहा है। सबके हित का यही आदर्श श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत पर आधारित भक्ति मार्ग में भी दिखाई देता है। इस करुणा युक्त भक्ति का प्रवाह देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा। गुजरात में नरसिंह भगत ने इसी परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु का वास्तविक भक्त उसे माना जो दूसरों के कष्ट को समझे तथा उनका दुख दूर करने में लगा रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी नरसिंह मेहता द्वारा दी गई वैष्णव भक्त की इसी परिभाषा को अपनाया। आधुनिक युग में सनातन भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना करने वाले गांधी जी पर भी श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव दिखाई देता है। गांधी जी ने सन 1923 में अपने कारावास के दौरान रामानुज चरित नामक पुस्तक का अध्ययन किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी के जीवन में भी श्री रामानुजाचार्य जी का बहुत प्रभाव पड़ा था। श्री रामानुजाचार्य के बाद की सहस्राब्दी में उनकी सोच से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा। साथ ही समाज सुधार एवं मानवता के कल्याण हेतु जो बदलाव हैं उन पर भी श्री रामानुज स्वामी जी का प्रभाव दिखाई देता है। असम में श्री शंकर देव से लेकर
महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर तक, पंजाब में गुरु नानक से लेकर केरल में मेलपत्तूर नारायण भट्ट तिरी तक, इन सभी विभूतियों पर श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव था। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि यू मे मार्क द कैरेक्टरिस्टिक since the time of Ramanuja, the opening of the door of spirituality to everyone. That has been the watchword of all the prophets succeeding Ramanuja. देवियों और सज्जनों, श्री रामानुजाचार्य जैसे संत युग प्रवर्तक भी होते हैं और युग दृष्टा भी। आज हमारा संविधान हमारे देश की व्यवस्था का आधार है। सदियों पहले मंदिर और मठ संस्कृति और कार्य व्यवस्था के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। उस परिवेश में समानता की स्थापना करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने समाज के पिछड़े वर्गों को मंदिरों और मठों की व्यवस्था में सहभागी बनाया। इस प्रकार हमारे संविधान के समता मूलक आदर्श श्री रामानुजाचार्य के विचारों और कार्यप्रणाली में स्पष्ट दिखाई देते हैं। देवियों और सज्जनों, जो संत बहुत महान होता है उसे भारत के लोग ईश्वर के समकक्ष रखना चाहते हैं। श्री रामानुजाचार्य को इलाया पेरुमाल यानी परमेश्वर के अनुज अर्थात लक्ष्मण कहने के पीछे हमारे देशवासियों की यही भावना झलक दिखाई देती है। एक लोकप्रिय श्लोक में अलग अलग युगों में जन्म लेने वाले भगवान विष्णु के छोटे भाइयों का उल्लेख किया गया है। उस लोक मान्यता के अनुसार सबसे पहले अनंतनाग यानी शेषनाग के रूप में, उसके बाद त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में, तत्पश्चात द्वापर युग में बलराम के रूप में और अंत में कलयुग में मुनि रामानुज के रूप में भाई ने विष्णु रूपी भाई की सेवा की। यह लोक मान्यता श्री रामानुजाचार्य के अतुलनीय महत्व को रेखांकित करती है। तेलुगु भाषा में महानतम भक्ति काव्य की रचना करने वाले श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय के संत कवि श्री अन्नमाचार्य ने कहा था, क्या कहा था? गतुलन्नी किल महीना कलयुग मंदुनु गति इतड़े चूपे घना गुरु दई बमू। अर्थात इस कलयुग में जब मुक्ति के सभी मार्ग बंद हैं, तब ईश्वर की भांति श्री रामानुजाचार्य सभी प्राणियों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। देवियों और सज्जनों, हमारी परंपरा में प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने के लिए साकार प्रतिमा या मूर्ति को आधार बनाया जाता है। किसी स्वरूप के आलंबन के बिना भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तिरुपति बालाजी तथा श्री पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में दर्शन करते समय जिस प्रकार की भक्ति भावना का अनुभव मैंने स्वयं में किया, वह केवल चिंतन और कल्पना के आधार पर संभव नहीं है। वेद साहित्यों में ऋषियों द्वारा देवताओं से की गई यह प्रार्थना मिलती है, जिसमें कहा गया है अश्मा भवतु ते तनु, अर्थात आपका शरीर दृश्यमान बने जिससे कि हम सहज भाव में आपका दर्शन कर सके। ईश्वरीय गुणों से युक्त विभूतियों को ठोस आकार में देखने की यह भावना ही श्री रामानुजाचार्य की इस विशाल प्रतिमा के निर्माण की प्रेरणा रही है। इस दिव्य तथा भव्य समता मूर्ति के निर्माण के लिए श्री रामानुज शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए मैं आदरणीय जीआर स्वामी जी तथा सभी आयोजकों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। यह भव्य एवं विशाल प्रतिमा, जैसा कि आप सब जानते हैं, पंचधातु से निर्मित एक मूर्ति मात्र नहीं है। यह प्रतिमा भारत की संत परंपरा का मूर्तिमान स्वरूप है।
यह प्रतिमा भारत के समता मूलक समाज के स्वप्न का मूर्तिमान स्वरूप है। यह प्रतिमा भारत की आध्यात्मिक महानता का मूर्तिमान स्वरूप है। यह प्रतिमा भारत के स्वर्णिम भविष्य का मूर्तिमान स्वरूप है। Ladies and gentlemen, we have been celebrating the 75 years of Indian independence. One of the objectives of Azadi Ka Amrit Mahotsav is to rediscover those values that inspired our freedom struggle. Then the young generation would come to know the sources of the various movements led by Gandhiji, Baba Sahab, Dr. Ambedkar and others. Then they will realize how the founding fathers of our republic connected us to our heritage as expressed in the life and work of Sri Ramanuja. देवी और सज्जनों, वैष्णव परंपरा में लोक संग्रह अर्थात सबके कल्याण के लिए कार्य करने को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। मैं चाहूंगा कि जिस निष्ठा के साथ आप सब ने इस मूर्ति का निर्माण किया है अर्थात करने में सहयोग दिया है, उसी भावना के साथ आप सब नर नारायण की सेवा तथा कल्याण हेतु देशव्यापी योजनाओं की परिकल्पना करें तथा उन योजनाओं को कार्य रूप प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि इस संस्था द्वारा लोक कल्याण के प्रभावशाली कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। ऐसे प्रकल्पों से समता मूलक समाज के निर्माण की दिशा में हमारे राष्ट्रीय प्रयासों को बल मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। Jai Sriman Narayana, on behalf of SRS Samaroham team, we sincerely thank the Honorable President of India, Sriman Ramnath Kovind ji, for taking precious time to grace us with inspirational message. Please rise for national anthem.